नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड्स पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 13 फरवरी से 18 फरवरी 2016 तक इस कैंपेन का आयोजन किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। Thank you, Priyamada. Hello, viewers. You are tuned to Doordarshan, India's national broadcaster. They say that the best time to plant a tree is 20 years ago. The next best time is right now. So this is truly a time of great expectations for India as we await the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, who very shortly will be inaugurating the Make in India Center right here at this MMRDA in the Bandra Kurla complex in Mumbai. This Make in India is designed to project India's image to the world as a center of manufacturing excellence, and it encompasses many things. आज सुबह ही प्रधानमंत्री का मुंबई में आगमन हुआ है और सबसे पहले वे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी फंक्शन में उपस्थित रहे, जहां सोसाइटी की नई बिल्डिंग का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। लेकिन अब से बस कुछ ही देर में वे उद्घाटन करेंगे मेक इन इंडिया सप्ताह का इस MMRDA ग्राउंड्स पर। इसकी घोषणा 2014 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने की थी लाल किले से, और उसी को लागू करने के लिए ये प्रयत्न जारी रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि निवेशकों के लिए देश में आकर्षक अवसर पैदा करने होंगे और निवेशकों को देश के बाहर जाने का रुझान बदलना होगा, और जो बदलने की लगातार कोशिश होती रही है। That's right. After starting of the initiative, as it is going on even more in full stream, and the Prime Minister has also had other initiatives which include the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. He's had the Shrameva Jayate mission, which is all about labor reform, the Swachh Bharat mission, which was so very well received, and now it is the Make in India campaign. This Make in India is a truly national initiative which is to facilitate investment, to foster innovation, to enhance skill development, to protect intellectual property, build best-in-class manufacturing infrastructure, and all in all, to make India a preferred global manufacturing destination. So there are many things in this Priyamada that are under this aegis of Make in India. So the entire world is actually watching, because this is the time when the world with great expectations is looking towards India. It's a time for India to break out from the past and take its rightful place amongst the top nations of the world. बिल्कुल सही। और ये है मेक इन इंडिया का मैस्कॉट, द शेर की दहाड़ जिसे कही जा सकती है। और ये शेर काफ़ी सारी बातें, या फिर ये मैस्कॉट बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, यहाँ से एक अलग राह पर चलना है, एक तरह से यही संदेश दिया जाता है। और ये लोगो जो है ये नेशनल एम्बलम से इंस्पायर्ड रहा है। That's right. It's inspired by the Ashoka Chakra, and if you look at the emblem, it strides very majestically. There are wheels moving within wheels, which denote progress, peaceful progress, dynamism, and it also harkens back to India's enlightened past, and not forgetting that it points the way to a vibrant future. Absolutely so. और जैसे कहा गया है, from intent to action, blueprints to results, red tape to red carpet, there has never been a best time to make in India. यानी कि इरादों से कार्य तक, रूपरेखा से परिणामों तक, लाल फीते से लाल कालीन तक, अब से पहले कोई बेहतर समय न था Make in India. Absolutely, you're totally right, and I think the entire world knows that, because at this Make in India center that's being inaugurated, we have almost the entire world here with us. There are participant countries which include Sweden, Finland, Poland, Germany, UAE, there's Australia. There are close to 200 exhibitors, most of them international. There are close to, I think, over 60 countries representatives are going to be with here. And I hear there's going to be over 5,000 delegates over the 7 days of this Make in India extravaganza. यकीनन काफ़ी सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हैं जो कि बिज़नेस की बात करेंगे और बिज़नेस के बारे में और बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान बंदरगाह, उद्योग और कपड़ा समेत विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी सारे निवेश प्रस्ताव आने की शक्यता है।
और ख़ास तौर पर इस दरमियान यानी कि 13 फरवरी से 18 फरवरी इस सप्ताह के दरमियान आयोजित होने वाले सेमिनार में भी अलग अलग देश भारत के साथ साझेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 500 से भी और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन MMRDA ग्राउंड्स पर हो चुका है। अब से बस कुछ ही देर में वे इस सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। One of the very important initiatives is the opening of the sectors to foreign direct investment, and that is what the world has been looking forward to, Priyambada. Most of the sectors are open for much more investment. There's 100% FDI that has been open for in automobiles, automotive components, electronic systems, in food processing, information technology, business processing, biotechnology, chemicals, construction. It's all 100%. In defense manufacturing also, it's increased from 26% to 49%. Media and entertainment, well, it's still 26%, especially the news. And in space exploration, it has opened up to 79%. So there's a great wealth of opportunities here for industries from all across the world to get involved and engage with Indian industry and move forward this Make in India. और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस योजना पर काम शुरू किया गया है, जिसके तहत खास तौर पर कैपिटल गुड्स को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ है। साथ ही तकनीक और आधुनिकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अच्छी और ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा भारत में होगा। और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पैकेट या वस्तुओं पर अब मेड इन इंडिया लिखा हो, और ये तब संभव है जब उस वस्तु का निर्माण भारत में हुआ हो। That's very true. And the other idea that he is promoting is that zero effect, zero defect. That means the manufacturing has to be so good that there's zero defect, and zero effect, that means zero effect on the environment. Has to be made sustainable, has to be made with greener inputs, and has to be made to world standards. So there's a lot to look forward to. This Make in India campaign not only drives industry and manufacturing, also laying emphasis that India is not only a service-oriented country, a service contributes quite a major part to the GDP, that manufacturing also can, from its 15%, move on to greater. और देखा जाए अगर तो भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं, खासतौर पर 2014 और 15 के वर्ष में, इनमें से काफ़ी देश इस मेक इन इंडिया कैंपेन में शामिल हुए हैं। और ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल पैविलियन है, जहाँ पर अलग अलग देशों ने अपने तरीके से अपनी तरफ से मेक इन इंडिया कैंपेन में भागीदारी होते हुए और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बारे में। So there's a great buzz. You can see some of the internationally well-known companies are being shown here. There are so many pavilions that it's going to be almost impossible to capture all this. I think it's spread over almost 2.5 lakh square feet. Absolutely. So it's a major enterprise. There are expected to be over 2,500 bilateral meetings. There are going to be almost close to 10,000 Indian industry leaders who are going to be here over the next several days, including today, of course. And at different days, there's a different program, and it's not only constrained to the BKC, but all over Mumbai. There are going to be exciting programs just to keep in with the Make in India campaign. And it's not only just industry, there's also culture, and if you love food, there's also going to be a food festival. So there's something for everyone to make this Make in India absolutely memorable. For us, as we sit here and we watch, we can see the manufacturing might on display at some of the pavilions, and time permitting, we shall be able to take you through a brief glimpse of some of the other pavilions while we wait for the Honorable Prime Minister as he steps forward to the official inauguration of this Make in India Center. बिल्कुल सही। हफ्ते भर में काफ़ी सारे इवेंट्स प्लान हो चुके हैं और मल्टी सेक्टरल एग्जीबिशंस हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर को जताने का एक बेहतरीन सा मौका होगा। ये पूरे हफ्ते में इस मौके का फ़ायदा लिया जाएगा। निर्माण क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उन्हें दर्शाने के लिए मेक इन इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं इस उद्घाटन के लिए। बस कुछ ही देर में रिबन कटिंग के बाद उद्घाटन होगा और विविध पैविलियंस को भेंट दी जाएगी। The Honorable Prime Minister steps forward to take for India a very poignant step. The future, it's very aware, lies in manufacturing, and most especially domestic manufacturing, which is the key to faster,
more inclusive and sustainable growth. Manufacturing has many stakes involved. It's not just because the sector employs about 30% of the non-agricultural workforce in India, but also because its overall contribution to the economy. And only a sharp increase in Indian manufacturing will increase the overall income levels of the country. So this is a very important step, and it's a very right decision that the Prime Minister has taken to put his weight behind this Make in India campaign, which encompasses several initiatives. डिज़ाइन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी को साथ मिलाकर इस मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है और हज़ारों पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं जो शामिल होंगे। 100 से भी अधिक कंपनियां हैं, 17 राज्य हैं और इट्स टाइम नाउ। They're cutting the we have और इसी के साथ इस मेक इन इंडिया सप्ताह का मुंबई के MMRDA ग्राउंड्स पर उद्घाटन हो चुका है। We have the Premier of Finland, Mr. Juha Sipilä, right there next to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, captains of industry as they now step forward to the hall. Smiling faces, and you can see the crowds just flocking to the venue. Of course, it's a very restricted entry, but still there are so many people there. So you can just imagine how many more people are waiting outside to get inside. MMRDA ग्राउंड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है और अब प्रधानमंत्री पैविलियन 4 की तरफ, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशंस हैं और अलग अलग देशों के अपने तरीके से मेक इन इंडिया में शामिल होने का ये जो प्रयास है वो वहाँ पर दर्शाया गया है। उनके साथ हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला, और फिनलैंड के साथ भारत के संबंध रहे हैं। ये बाकी देशों की जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है या फिर एक्सपोजिशन, ये जो दिखाया जा रहा है प्रदर्शनी में, ये अलग अलग देश इसमें शामिल हुए हैं। भारत के साथ कुछ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं, जिनमें से UAE, सऊदी, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। इनकी तरफ से ये एक प्रयास हुआ है कि इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने। Absolutely right. As you say, some of the partner companies who are partner countries who are here with us today include Sweden, Finland, Poland, Germany, UAE, Australia. Now these have come across because the Prime Minister in the last year has definitely visited so many countries, fostering growth between the two countries, fostering trade and fostering communication. And most of that can be seen here as it bears fruition. With many of these countries he has recently visited in the past to encourage bilateral ties, and they can be seen here in full support for this Make in India initiative. और इस मेक इन इंडिया की शुरुआत देखा जाए अगर तो मंगलयान, भारत का मंगलयान जो एक बहुत कामयाब मिशन रहा, उसके बाद इस मेक इन इंडिया कैंपेन का जो ऐलान हुआ वो यही सोचकर, क्योंकि भारत का मंगलयान 67 करोड़ किलोमीटर का सफ़र पूरा करके पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह की कक्षा में जा पहुंचा था और दुनिया के तमाम देशों ने इससे करीब पहुंचने की जो कोशिश की थी, और जिसके बारे में भी कुछ पैविलियन में ये दर्शाया गया है। जब हम और आगे देखेंगे कार्यक्रम में बढ़ते हुए, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं जो देश विदेश से आए हुए हैं और इस मौके का एक बेहतरीन सा उपयोग करने की कोशिश। True, Priyambada. This Mars probe Mangalyaan was an eye-opener to the world because nobody expected that, and definitely nobody expected it to be done at a fraction of the cost of what it has cost some other nations to sometimes successfully and very often not successfully send up their probes into space. So that was a real eye-opener. Although this Mangalyaan project started many years ago, it happened at the right time. And this was a great kickoff to make the world aware that India is a destination that can provide world-class manufacturing capabilities, world-class manufacturing facilities, and be amongst the top manufacturing destinations in the world. मेक इन इंडिया अभियान को विदेशी निवेश को भारत में बढ़ावा देने के साथ साथ एक हद तक कुछ सुस्त पड़े भारतीय उद्योगों को भी पटरी पर लाने का मकसद रहा है। इस अभियान को लॉन्च जब किया गया है और साथ में काफ़ी सारे लोग जो न सिर्फ इन देशों के अहम And yet the ribbon cutting continues. There's a lot of enthusiasm, and as we watch the ribbon cutting, let me tell you that these initiatives encompass many things as India dramatically tries to revamp its brand in the international arena.
Indian products are now moving off from their older view to being more international. That's why we have so और many international प्रधानमंत्री के people साथ here. है स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन ल्योफेन, और स्वीडन के साथ भी भारत के काफ़ी बेहतरीन संबंध रहे हैं। 1949 से स्वीडन के साथ भारत के जो संबंध स्थापित हुए हैं, कोलैबोरेशन रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस, ये सारे ही क्षेत्र हैं जिस पर फिर एक बार नज़र डाली जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में स्वीडन के साथ हमारे काफ़ी बेहतरीन संबंध रहे हैं और काफ़ी एक्सचेंजेस रहे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। काफ़ी सारे भारतीय आईटी कैंपसेस सैलरी भी स्वीडन में खोले गए हैं, और फार्मा, बायोटेक, इन कुछ सेक्टर्स पर भी गौर किया जाएगा। तकरीबन अब तक के हिसाब से 9,000 भारतीय स्वीडन में हैं। Oh, लेकिन that's अगर encouraging. ये जब एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ा रहा और ट्रेड के क्षेत्र में, there's so many good things to learn from Swedish manufacturing practices and the Certainly. Swedish way of life, and this is going to help one of the main agendas of Make in India, that is local and manufacturing should reach international technical standards, because international technical standards are what's required by all across the world. Some of the other aspects which will be looked into to improve India's image and to drive Make in India is labor reforms are definitely being upgraded. Labor reforms are being, there are newer labor reforms coming in. Some of the older laws are being revamped. There is going to be easier compliance mechanisms. A lot of red tape is just going to be cut like the proverbial Gordian knot. And there's going to be the end of the license Raj, and you move towards a greater IT-enabled workflow. So there's so many initiatives on so many levels. It's not just saying better and bigger industry, but also better HR, better people, to skilled people, a skilled workforce, which is one of the main agendas, is to provide a skilled workforce to drive these industries. अंतर्राष्ट्रीय पैविलियन को भेंट देते हुए प्रधानमंत्री और उसके बाद कुछ और पैविलियंस को भेंट देने की ये बात आज की सुबह इस MMRDA ग्राउंड्स पर। MMRDA ग्राउंड्स के अलावा मुंबई के गेटवे और गिरगांव चौपाटी पर भी मेक इन इंडिया के कुछ और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत यहाँ से है। और जैसे कहें कि ऑटोमोबाइल से एग्रो प्रोडक्ट्स तक, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक, सैटेलाइट से सबमरीन्स तक, टेलीविजन से टेलीकॉम तक का सफ़र, फार्मा इंडस्ट्री से बायोटेक तक का सफ़र, पेपर से पावर प्लांट्स, रोड से ब्रिजेस, from houses to smart cities, from friendship to partnership, and from profit to progress. Whatever you want to make in India. In India, absolutely. Well, there seems to be nothing that has been skipped out from this vision of Make in India. And as you can see, the photographs are still on, the visit is at the various pavilions are still going on. And this is just to emphasize India's place in on the world stage, in world history, to be certain, because the whole world is looking forward to India as a manufacturing hub, because in a short while India is going to be the place. It has the youngest population, the human population, 550 million people who are under the age of 25. Rapid urbanization is taking place. There is a growing consumer base. So India is the place for the world to get involved with. भारत अगले दशक में रक्षा निर्यात की तरफ ज़रूर ध्यान देगा, और मकसद केवल अफ्रीकी और एशियाई देशों तक पहुंचने की कोशिश नहीं है, लेकिन उसके पार भी पहुंचने की कोशिश है। न केवल भारत की उपलब्धियों पर आने वाले समय में हम सोचेंगे, लेकिन भारत को दुनिया का सबसे बड़ा काबिल राष्ट्र बन पाए, इसकी कोशिश ज़रूर होगी। That's why this flagship event, which will propel India's economy by forging a global engagement with Indians, including, of course, partnerships, investments. There's a whole gamut of activities. There's a whole gamut of vistas for engagement with foreign participation, not only directly as an investment in foreign direct investment. There's also training, there's also HR, there's skills upgradation. There is the entire human spectrum that can be upgraded, and this all falls under this Make in India umbrella, so to speak. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक देखा जाए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 12वें नंबर पर है, और MMRDA ग्राउंड्स पर ये सारे डिटेल्स लोगों के लिए लगाए गए हैं कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत आज 16वें क्रमांक पर है।
भारत में विदेश निवेश 35% बढ़ा हुआ है और भारत विश्व में 7वें नंबर का ब्रांड बन चुका है। आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल माल वाहक है, दैट्स रेल फ्लाइट कैरियर, and India has the largest power generation portfolio in the world. Oh, so there's so we many are things. surging ahead. Well, there's so many good things that we can hear and speak about India. The visuals that you can see are of the aerospace and design and defense pavilion. Defense infrastructure, foreign direct investment has also increased in aviation. In aerospace, actually, it's gone up to 79%. So we can look forward to so much more international participation in India's defense and aerospace sectors. Some of them already are there. There's the French involvement with the aerospace sector. There are other countries who are involved with India's defense sector, so including Russia, of course. And there's much more space for other countries also to get involved with such a large country that is India, whose requirements are definitely as large as the country is. और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी लोगों ने ये सोचा था कि इस तरह से निवेश किस हद तक हो पाएगा, और इसकी बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में इजराइल के साथ भी कुछ तकरीबन 100 कंपनियों के साथ इस योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए भारत की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने की चर्चा की गई है, और ये चर्चा लगातार बनी रहेगी। और अलग अलग देशों के साथ ख़ासतौर पर रक्षा मंत्रालय ने इस तरह से विविध देशों की विविध कंपनियों को एक साथ एक मंच पर लाने की ये जो पहल की है, और इस पहल का एक बेहतरीन हिस्सा और As you can really see, में ज़रूर देखा जाएगा। The government of India has allowed 49% direct investment in FDI in the defense sector and 100% in the railways infrastructure sector. Now that means so many things, because India is a country that lives and develops on its railroads. People travel large distances by rail. It has the world's largest rail network, and in suburban cities like Mumbai, the railways is the lifeline, is the lifeblood of actually driving this urb stream of India. So if it drives this prime city of India, you can imagine its real worth. So 100% foreign direct investment in the railways is a real surge up, because we can look forward to so much better communication. और अब पैवेलियन 6 की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लोगों तक जो पहुँचेगी। इनफैक्ट इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बाय 2016 तक ये माना गया है कि इस वर्ष के आखिर तक भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोटिव मार्केट कहलाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है दैट मेक ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया, और इसका परिणाम भी काफ़ी हद तक हमारे सामने है। Correct. So we expect to see more and more automobiles made in India, more and more world-class emission automobiles made in India, and of course along with all the automobiles, there's also the drive to make better and wider road network. So a lot more highways connecting. There's also the corridors which are being made, the dedicated freight corridors to enable freight to travel across various parts of India. There are at least 5 dedicated freight corridors that are being created to enhance connectivity and also to increase greater movement of goods and transport from one place to another. मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़े चैलेंज रहेगा, और इस चैलेंज को ओवरकम करना, या फिर इस चैलेंज के साथ इसकी सोच को रखकर आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काफ़ी सारे कुछ नियम हैं जो इसके अनुकूल करने पड़ेंगे, जिसके तहत ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और भारत को निर्माण के तौर पर एक केंद्र बनाने के लिए ये एक सफल प्रयोग ज़रूर कहलाया जाएगा। भारत में जो कारखाने लगेंगे, जिसके ज़रिए माना जाता है कि और नौकरियाँ बढ़ेंगी, विकास होगा, विदेशी पैसे भी आएंगे, और फिर एफडीआई के बारे में ऑलरेडी ये भी माना गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एफडीआई इज़ नॉट जस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ फर्स्ट डेवलप इंडिया, व्हिच इज़ अ वंडरफul. That's very nice. That's very nice. So first develop India. That's very true, and that's what he's looking for, because there are countries and companies here who are participating, which are not only investment based but are also think India, think global, and work globally. So there's going to be a lot of
focus here not only on investment but also from Indian initiatives and creating for the Indian Milo. We have global brands here. There are going to be key decision makers. There's going to be talks on exports. There's going to be knowledge sharing. There are going to be industry trends, opportunities, creating benchmarks, and as you can see, there is a model of PSLV, if I'm not mistaken, right here that we're passing through the defense, the Indian Space Research Organizations. और भारत के स्पेस रिसर्च के इतिहास की एक कालजाई घटना है, अर्थात मंगलयान नैरेटिव, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक मेंशन किया है। दुनिया के तमाम देशों ने मंगल के करीब जो पहुंचने की कोशिश की थी, तकरीबन 51 मिशन छोड़े गए थे और कामयाबी मिली थी केवल 21 मिशंस को, लेकिन पहली कोशिश में ही भारत कामयाब हुआ है और मंगलयान पर पहुंचे हुए मार्स ऑर्बिट मिशन की इस कामयाबी को एक इतिहास की कालजयी घटना कहना बिल्कुल गलत नहीं है। 450 करोड़ विच इज़ जस्ट 1/10 ऑफ द लार्जर बजट, इंटरनेशनल बजट जो है इसरो ने कर दिखाया है और भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जिसका झंडा मंगल पर फहराया और उसी के बाद इस मेक इन इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत हुई है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम्स दैट इंडिया हैज। Absolutely. So now it's not only BPOs that are going to be cost effective, but also manufacturing is going to be extremely cost effective, and not only in the space sectors, but the initiative is to focus on job creation and skill enhancement in 25 sectors, which include automobiles, automobile components, aviation, space, electronic systems, food processing, information technology, business processing, biotechnology, chemicals, construction, defense manufacturing, of course, electrical machinery, leather, media and entertainment, mining, oil and gas, pharmaceuticals. It seems like no core industry has been overlooked. For the development of India, each and every one of these industries is a core necessity, and the focus is on improving not only investment but also skill enhancement, increasing the quality, minimizing the impact on the environment, creating an environment so that business can thrive without too many deterrents. So this is something that India and the world is looking forward to, this Make in India, and this Make in India Center right here is being inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, at the BKC, which is in Mumbai. निवेश के लिए तकरीबन 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की या सेक्टर्स की पहचान की गई है। फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बिल्कुल अपनी तरफ से ये कोशिश करेगी कि बेहतरीन से बेहतरीन निवेश के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं। ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण भारत में हो, ये ख्याल है। वस्तुओं पर उसके निर्माण करने वाले देश का नाम हो और भारत नाम हो। इस अभियान का मकसद है कि चीज़ों पर मेड इन इंडिया लिखा हो, जब वो मेड इन इंडिया में ही बन पाएगी। और दुनिया भर के लोगों के लिए अपील है कि भारत में आके कारखाने लगाएं, जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद बात है। The Honourable Prime Minister is making the most of his time here in Mumbai. He has a very busy schedule. Earlier this morning, he inaugurated the Bombay Art Centre, which was in Mumbai, in Bandra West. Now he's right here at the BKC inaugurating this Make in India Centre. Immediately after this, he'll head over to the NSCI Worli, where he has yet another inauguration. Then evening there's a dinner, and then he's back to Delhi. So it's a very packed program, but he doesn't show any sign of strain. I guess that must be because of his regime of starting his day with yoga and absolutely remaining and I think fit. when you have so many things lined up for the day, there is really no chance to be tired. और इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत को एक तरह से पूरे दुनिया में एक सांस्कृतिक तौर पर इसकी पहचान रही है, लेकिन अब इस नई सदी में भारत की और उपलब्धियां देश तक लाने की कोशिश, मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों को एक न्योता भारत में आने का, और भारत के व्यापार की मात्रा जो है ट्रेड वॉल्यूम के 90% मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए है, सामुद्रिक परिवहन के ज़रिए है। 90% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड वॉल्यूम इज़ थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। और अब प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं अगले पैविलियन की तरफ। तकरीबन 27 अलग अलग पैविलियंस यहाँ पर मेगा हॉल्स जो बनाए गए हैं MMRDA ग्राउंड पर, जहाँ पर स्टेट और सेक्टर परिसंवाद का आयोजन भी होगा। विविध देशों की प्रदर्शनी यहाँ पर है। 190 से भी अधिक
प्रदर्शकों ने अपने उत्पादन की काबिलियत को यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहा है। We're looking at the Indian Space Research and Development Organization's pavilion, and many companies have taken to heart the Make in India campaign and have committed and have already started many of the manufacturing activities in India. With the companies like the Spice Group, Samsung, Hitachi, Huawei have already moved a lot of their manufacturing to India and have committed also to move a lot more into India as time goes on. So besides, of course, the talk about Make in India, there's positive steps happening, there's work on the ground, and so there's something to look forward to for everybody, especially all of us here in India, because there is going to be things for us to do. And for the world, there is going to be a lot to look forward to India, because as I said, India is one of the world's largest markets, growing urbanization, there is a growing young workforce and increased consumption that's going all over the place. So there is something for everyone. जैसे आपने कहा है ऑलरेडी कि देश में बनी हुई चीज़ों के दाम भी कम होंगे, इसके तहत ऐसे माना जा रहा है, और इसी के लिए इस कैंपेन का आयोजन जो हो रहा है ये अलग अलग क्षेत्र में इस कैंपेन को बढ़ावा देने की कोशिश होती है, क्योंकि चीज़ों के दाम कम होंगे, क्योंकि सामान जो है विदेशों से जो लाना पड़ता है और इसलिए जो दाम बढ़ जाते हैं। एक कोशिश ये रहेगी कि देश में बने हुए इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक लाभ के तौर पर लोगों तक जो पहुंचाया जाएगा, जब उन्हें उसका भी फ़ायदा होगा, और इसमें हर एक का जुड़ाव है। यहाँ पर MMRDA में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ये जो मेगा हॉल्स बने हुए हैं, जहाँ पर विविध तरह की देश विदेश की कंपनियों ने अपनी तरफ से एक कोशिश की है अपने उत्पादन को आगे ले आने की, या फिर भारत के साथ एक समझौता जो हो रहा है विदेशी कंपनियों का, इन्हें सामने ले आने की। लेकिन इसके अलावा भी इसका उपयोग जो है, या फिर मेक इन इंडिया कैंपेन का जो फ़ायदा है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। MMRDA ग्राउंड्स पर आज का ये उद्घाटन सिर्फ एक शुरुआत है, और ये शुरुआत एक तरह से मानी गई है कि इट्स अ मोर फॉर्मल बिगिनिंग, क्योंकि इससे पहले काफ़ी प्रयास हुए हैं और उसे मिलने का। एंड देखिए ग्राउंड्स पर काफ़ी भीड़ है, ऑफ कोर्स a lot of business tycoons here. Yeah, I did see Mukesh Ambani and Cyrus Mistry in the crowd there. But you're right, it's a matter of great pride for every Indian to be able to witness this and be a part of this Make in India, because as you saw a little while earlier, there was the big board there saying that among the top 10 FDI destinations in the world, India is. And this is, from the United Nations survey. So there is so much to look forward to. As you already said, we are amongst the world's fastest growing economies. We're among the top countries in growth, innovation and leadership. World's most attractive investment destination. There are so many firsts that we have, and it's time to prove to the world that India can and will create products to world-class standards. It's not only services, as has been going on for so long, but also manufacturing. So this is a great initiative, a great time, and that's why head honchos from many companies are here at this event. There are many countries being represented, and of course different sectors of the Indian economy, just giving you a view of what's possible and a view of how there can be collaboration between companies and countries with India. और देखा जाए एक तरह से जो भारत के टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज़ रहे हैं, इन टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज़ में से काफ़ी सारे देशों ने अपनी तरफ से इस मेक इन इंडिया कैंपेन में शामिल होने की जो कोशिश की है। इनके साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी बेहतर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना और अमेरिका के साथ तो अर्थात ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा रहा है, लेकिन इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, UK, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं ये बेहतर बनते रहे हैं। और भारत की यही कोशिश है कि आने वाले समय में भारत विश्व में प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित हो, भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले, और इसके लिए नीतियों को जो थोड़ा बदलना पड़ेगा उसकी तरफ भी अभी ध्यान दिया जा रहा है। तकरीबन 25 सेक्टर्स में ये बड़ा बदलाव अपेक्षित है। One of the sectors is textiles, as you can see by the mannequins there, and it's not only a big industry but also smaller entrepreneurs. There's a great focus on developing medium and small scale industries, on developing entrepreneurs, on developing services, on service providers,
In fact, there's also a hackathon that's going to happen at IIT Mumbai. You did Right. speak about IIT, where coders, young coders, engineers or designers will put forth the ideas to solve design problems. There's going to be a contest. There's going to be some winners whose names will be announced. So there's excitement all across the board. It's not only leaders of industry, but also young persons with ideas, young persons who use new technologies are able to get into it and also be a part of Make in India. And India is definitely, it's considered to be the 9th largest startup hub, Yeah. the largest power generation portfolio in the world that it has. Okay. और भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर भी है. It's the largest jute producer in the world. At the same time, India is the second largest cotton producer in the world. So all the good natural things are Are with us. Are with us, absolutely, are in India. And since this is being one of the good things that Indians do like is good food, so this part of the Make in India is also going to be about food in India. You know, lots of foods in India from different parts of India are going to be showcased and highlighted at Make in India. Because this being Maharashtra, there's also going to be a Maharashtra night, there's going to be a street food festival. Who doesn't love street food? I mean, all across India, if there's one thing that people love, it's like heading out in the evenings and going to some place where you can enjoy yourself. Gastronomical delights on the street. So there's so much to look forward to. और अब प्रधानमंत्री है उस पैविलियन में जहाँ पर विविध राज्यों की तकरीबन 17 राज्य इसमें शामिल हुए हैं, अर्थात महाराष्ट्र का एक अलग पैविलियन है इसमें, लेकिन इन 17 राज्यों ने अपनी तरफ से इस पैविलियन में एक प्रदर्शनी अपनी लगाई है, जिसके ज़रिए फिर एक बार उनके यहाँ पर निवेश के कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं व्यापार के लिए, निवेश के लिए, विनियोग के लिए और उत्पादन के लिए, जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं. और यही एक कोशिश रहेगी फिर एक बार इस 17 राज्यों में और अब प्रधानमंत्री का सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर इस पैविलियन में. This is the Odisha pavilion, and right next to it is the Punjab pavilion. These pavilions, these states are showcasing the opportunities that investors, not only international but also national investors, industry leaders can have when they invest in that state. So there are business opportunities, there's opportunities for industry, there's opportunities to provide service and training. So each of these pavilions is going to showcase the opportunities available. So industry is very excited to be here because this shows them on one platform, on one stage, the opportunities that are available in India on a first-hand basis. So if you're a foreign investor and you're here right now, you can just walk across to different pavilions, you can walk across to sector pavilions, or you can walk across to the state pavilions, and you can then gauge the opportunities that are available for partnership. So it is a very exciting time for industrialists and business owners, business drivers, business providers all across the world. Make in India has really started off to a grand start. It encompasses including design and jewelry, as you can see some visuals out there. And the Honorable Prime Minister, as usual, is being mobbed by the people, and some fine jewelry there. And I can see a photograph of one of India's famous film stars. I was about to say exports, but that's not true, right? Okay. Well, something there. और जो विजन रहा है इस मेक इन इंडिया का ज़्यादातर यही है कि the initiative hopes to attract both capital and technological investment in India, and that the country will become the top destination globally for foreign direct investment, surpassing other countries which are already ahead of India. और एक तरह से अलग अलग सेक्टर्स का जो जिक्र हुआ है और जो सेक्टर्स यहाँ पर भी दिखाए गए हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग का भी एक स्टॉल, एक पैविलियन है जिसे प्रधानमंत्री भेंट देंगे. और आईटी और बीपीएम, लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की हमने बात की है कुछ समय पहले, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ये का अलग अलग सेक्टर्स है. काफ़ी भरोसा वो आ रहा है फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक पर, जो आने वाले समय में इसमें ज़्यादा बढ़ावा होने की कोशिश की जाएगी ज़रूर. The Prime Minister is taking it all with
very serious Great intent. elan, yeah. Yes, and great elan, as you say. And besides, of course, the visit to the different pavilions, which are many, as you did say, this is spread over 250,000 square feet almost in Bandra East. There's also going to be knowledge Which sharing. is a luxury in Mumbai, isn't it, Alan? to have, You can tell me to 2 have square such a feet is a sprawling luxury. area. 2 square feet is a luxury. So, you know, when you book airline tickets these days, you even check out how many inches of legroom space you get. So you can imagine how much 200,000 square feet is. It's truly luxurious, as you say. But besides, of course, just interacting and visiting, there's also going to be knowledge sharing. There's going to be sharing of knowledge. There'll be experts, there will be innovators, there'll be founders, key decision makers, brand managers, experts from different fields, from architecture, management, cinema even, fashion, who will be sharing of their knowledge with the publics. And they will be sharing their skills, their entrepreneurial attitudes, their benchmarks, industry trends, anything and everything to empower you to make in India and to make India better. एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 190 कंपनियां, जिनमें मल्टीनेशनल्स भी शामिल हैं, 5,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स, 60 देशों के 5,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स, और कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस इवेंट में, इस हफ्ते भर में अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। 17 राज्य जो हैं, दे विल सेल देयर इन्वेस्टमेंट क्रेडेंशियल्स ऑन द टर्फ ऑफ महाराष्ट्र, इफ आई मे से। और जब इस उद्घाटन की अब जब शुरुआत हो चुकी है, एंड वी सी सम वंडरफुल कार्स हियर, एंड ऑफ कोर्स यही फिर एक बार न्योता दिया गया है कि आइए और भारत में इसका मैन्युफैक्चर करते हुए। So from cards to handicrafts. So there's everything that you can that's being promoted, and handicrafts are a very important part because they give employment to entrepreneurs, to rural youth, and it also keeps a tradition and culture alive. Not everything is, you know, made by a machine and you know, designed to perfection. Handicrafts sort of bring you the earthiness of life. So handicrafts are very important. Besides, of course, really providing and keeping rural youth engaged, keeping people engaged in keeping our traditions or keeping the way of life continued, which is important. एक और स्लोगन दिया गया है, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। राइट। ये स्लोगन ज़्यादातर इसलिए क्योंकि प्रोडक्शन मैकेनिज्म, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट्स जो दिए जाएंगे, इनमें कोई डिफेक्ट्स ना हो, कोई खामियां ना निकले इनमें। और इस प्रोसेस के ज़रिए जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो काफ़ी लोगों के मन में ये आशंका रही है कि पर्यावरण के बारे में इसका संतुलन कैसे रखा जाए और क्या ये बेहतरीन है, क्योंकि अब तक कुछ और देशों का अगर उदाहरण लिया जाए तो जहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण जहाँ पर हुआ है और इस तरह का बढ़ावा दिया गया है बहुत ज़्यादा हद तक, वहाँ पर पर्यावरण का संतुलन नहीं रख पाए हैं। पोल्यूशन हैज़ बीन ऑलवेज ऑन द राइज, और भारत में ऐसा फ्यूचर कभी ना हो कि जहाँ पर केवल विकास के नाम पर हम अपने पर्यावरण का संतुलन ना रख पाए। तो वहाँ पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, डिफेक्ट प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए और कोई भी बुरा इकोलॉजिकल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से इस मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे ले जाया जाएगा। So a very strong directive to ensure that pollution is cut down, to have carbon footprint, zero carbon footprint, yes, less smaller carbon footprint, zero if possible. And you know, it's not only just, as you said, just create and make, as has been in the industrial revolution, without you know, really thinking about the cause and the effect. Here it's going to be create without defect, and of course by creating a zero effect on the environment and pollution. It's pretty hard to do, but that's what I think that's the major challenge. Yes, of course, it's the challenge, and that's what people are going to do. It's almost 12 o'clock, and time to think. My thoughts always shift towards food when it's time to eat. What is your favorite food or delicacy? मुंबई की बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, दो तीन बोले जाएंगे। And there is pav bhaji, there is pani puri. I'm just hoping कि न सिर्फ और राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं यहाँ पर और बिजनेस कॉन्शियस जो है, लेकिन विदेश से आए हुए लोग भी, जो ये स्ट्रीट फूड का जो एक माहौल बनेगा अगले कुछ दिनों के लिए, और उनके लिए ये शायद You're making my mouth water, definitely, and I'm sure, of course, it's going to be for people all across the world. For Indians too, there's going to be cuisine from different parts of the world, as some of our esteemed guests from across the world can be seen here. The chief, yes, that's right.
Shri Devendra Fadnavis is here. He's joined the Honorable Prime Minister again. He was with him earlier at the Bombay Art Society, and now he's joined him again here at this inaugural of the Make in India Center. So we are proceeding full steam ahead. And yes, महाराष्ट्र के पैविलियन की तरफ और from talking about food to eat, food for thought, and food for the rest of the world, for business and industry. The Honorable Chief Minister of Maharashtra has joined again with the Honorable Prime Minister. They were there. They were there earlier. We also see His Excellency, the Governor of Maharashtra, Shri C. Vidyasagar Rao. महाराष्ट्र की आकर्षक छवि को प्रदर्शित करने के लिए एक जो अलग मंडप बनाया गया है, ये पैविलियन जो है, जहाँ पर निवेशकों के साथ बैठकें भी होंगी और ख़ास तौर पर काफ़ी सारे निवेश की उम्मीद है। राज्य का जो उद्योग विभाग है वो निवेश के लिए पूरी गंभीरता से कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र को उम्मीद है कि वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बंदरगाह, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में विशाल निवेश हो सकता है और विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तकरीबन कपड़ा पार्क विकसित किए गए हैं जहां पर कपास उगाया जाता है। एंड वी जस्ट स्पोक अबाउट हाउ इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और ऐसे और 10 से 12 अलग पार्क विकसित करने की योजना है और राज्य सरकार को, महाराष्ट्र राज्य सरकार को ये यकीनन उम्मीद है कि कई विदेशों और घरेलू कंपनियां महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए ज़रूर तैयार होंगी और इसकी एक कोशिश, बेहतरीन सी कोशिश इस पैविलियन में एक छोटे स्तर पर जताने की कोशिश रही है। As you said earlier, and I also saw an Elephanta Cave Sky. This is the Maharashtra pavilion and the industries in Maharashtra. That's you can see here, and Maharashtra is aiming to get a lot of investment, especially Mumbai. Mumbai is being presented as a city where you can come and do business in Mumbai, where licenses have been streamlined, where availability of manpower is always there. There's connectivity, there is communication. So Mumbai itself as a city is looking forward to the world to come and interact and invest in Mumbai. So also is Maharashtra. So there is a great movement amongst states to invite and attract investors, to invite and attract industry to their respective states. So all in all, it's actually a great movement for India because states individually are vying to attract investors. That means there's going to be development, there's going to be industry, there's going to be infrastructure being built, there's going to be railways, there's going to be more roads, there's going to be greater communication, and this state Maharashtra, of which Shri Devendra Fadnavis is the Chief Minister, has several key advantages. One, of course, is the locational. There are excellent ports, there's rail and road connectivity. The business ecosystem is second to none in India. Mumbai is very well known for its professionalism. And I hope it remains that way. Yes, of course. As long as you're around, it's going to be professional. So yes. And Mumbai has all those advantages. Labor force, that's by and large very peaceful, also very adaptive to new skills. So Mumbai is pitching for a slice of the pie here at Make in India. और मुंबई ये एक अकेला इकलौता शहर नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र इकलौता राज्य नहीं है और तकरीबन 16 अलग-अलग राज्य हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इन निवेशकों को अपनी तरफ ले आए। और एक तरह से देखा जाए अगर तो वो जो 16 राज्य इसमें शामिल हुए हैं महाराष्ट्र के अलावा, जैसे हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, ये भी अपनी तरफ से बहुत एग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं अपने आप को। और एक तरफ से जैसे एल्रिक ने कुछ देर पहले कहा कि यही बात होगी कि न सिर्फ हर राज्य को अपनी तरफ से एक चयन करने का मौका मिलेगा, लेकिन और निवेशकों को भी राज्य को चयन करने का मौका मिलेगा। सो जिस राज्य की तरफ से बेहतर नीतियाँ या पॉलिसीज़ पहुँचाई जाएंगी, वहाँ तक बहुत ज़्यादा निवेशक उनकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। Absolutely, you're right. And there are some success stories like Gujarat, for example, in the last decade and a half has turned itself around, has become a destination for investment. Andhra Pradesh is picking up now because it's a place that's developing. Madhya Pradesh is opening up its vistas to development. We've got Chhattisgarh, which is also looking out
for investment in all sectors of the industry, including biocon and biotechnology. Rajasthan is opening into energy development, into infrastructure. Orissa, which at one point was a state that that was sort of not really into the peak of investment, has been actively and proactively actually looking out for investment in various sectors, especially in education, arts and culture. So all states all across India are really opening up, not only the traditionally so-called forward states, but even states which at one point were considered not so forward, are really moving with the ages and really picking up investment and industry and direction towards making themselves very, very competitive. बिल्कुल, और मेक इन इंडिया कैंपेन जो है ये केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि भारतीयों के साथ साथ और उनके आने वाले इस समय में उनके फ्यूचर को देखते हुए भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो इसमें इस तरीके से जताया जा रहा है और जो कोशिश पूरी तरह से हो रही है। लेकिन विदेशों के लिए भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश दिया जा रहा है कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, आपको मौका देने के लिए, और बेहतरीन तरीके से जो नीतियाँ जिनके बारे में अब तक शायद ये माना गया था कि ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाएंगे, उन पर फिर एक बार गौर करते हुए न केवल विविध राज्यों ने ये कोशिश की है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम हैज़ बीन अ टॉपिक इन डिस्कशन ऑल द टाइम कि क्यों तरीके हम बदल नहीं सकते हैं जहाँ पर और निवेशकों को ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। और इसके बारे में भी काफ़ी विचार विनिमय हो रहा है, चर्चा हुई है, और इसके बारे में ज़रूर सोच विचार करके इस पर अमल किया जाएगा और उसकी कोशिश हो रही है। Yes, that's right. All the discussions have happened. Yes, there, isn't it? Yes, traditional crafts. But you're right. A lot of discussion has happened, and the avenues have already opened up. The old roadblocks are being removed. And there has been positive inputs also, because very recently, just about a couple of months earlier, the Japanese Prime Minister Shinzo Abe, when he visited India, announced that Japan would set up a $12 billion fund for Make in India related projects. It would be called the Japan-India Make in India Special Finance Facility. So this is one of the many initiatives that have already accrued because of this Make in India push. So there are several like this, including the dedicated freight corridors, the dedicated communication corridors that are being put up all across India. So the fruits, benefits are definitely there for someone to see, and in a short while from now it will be visible to everyone. और इन 7 दिनों में, इस सप्ताह में मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत जो अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, MMRDA ग्राउंड्स पर से इसकी शुरुआत जो हुई है, और ख़ासतौर पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की यानी कि MMRDA के ये ग्राउंड्स जो रहे हैं, एक बड़ा बेहतर वेन्यू है ये। और ख़ासतौर पर यहाँ पर हमेशा ही ट्रेड एग्जीबिशंस होते रहते हैं, स्पोर्ट इवेंट्स होते रहते हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, अवार्ड सेरेमनीज़ हो चुके हैं। कई बड़े कलाकार, नेता, CEOs अपनी हाज़िरी इन MMRDA ग्राउंड्स पर लगा चुके हैं, और आज भी काफ़ी सारे ख़ासतौर पर बिज़नेस की दुनिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यही मेक इन इंडिया का उद्घाटन जो आज हुआ है, विविध पैविलियंस है यहाँ पर, और इन पैविलियंस में, इन मेगा हॉल्स को भेंट देते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। You're right. When you talk about doing business, you did mention that India's ranking amongst the world nations for ease of doing business was not that very happy. But things are changing, and it is now moving up amongst the countries of the world in which ease of business is one of the parameters, because very many things are being looked into, and age-old systems and age-old laws are being reworked and revamped. New systems are being put into place. There's more and more use of IT, and to ensure that business can be done in the best possible way. There is de-licensing, deregulation, there's to enable manufacturing, there's the creation of industrial corridors, industrial clusters, smart cities, of course, 100 smart cities which are being already implemented, and several 2 and 3 tier cities are amongst the smart city projects. Nurturing innovation and skill development. The government is actively pursuing the skill development program across all sectors,
And I think that is very important, yes. considering the number of youth or the percentage of youngsters in the country. Are you aware there's also skill development programs for speakers? I'm joking. There is for people in the voice field. So it's gone to that level that there is going to be skill development all across the board. You can't just without training just hang up your signboard and say you're a carpenter or a plumber or a painter or even a daycare worker. You have to be properly trained to provide the proper service so that people, so that it matches international standards across the world. And that is a major initiative because it gives a lot of confidence to a service buyer that you're getting a service of a particular quality. बिल्कुल सही और मेरे ख्याल से ये अपेक्षा रखना गलत भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों का हम हिस्सा होना चाहते हैं, ये हिस्सा होते हुए कहीं भी किसी भी तरह से क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमेशा हमेशा बने रहे। अगर हम हर प्रोडक्ट पे चाहते हैं आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में, शायद एक दशक में और उससे भी ज़्यादा समय शायद लग पाए अगर, लेकिन जितना कम समय लगे देश को आगे बढ़ने के लिए जो ज़्यादा मौका मिले वो उतना अच्छा है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हर प्रोडक्ट पर हो, हर पैकेट पर हो, दुनिया भर में ये ऐसा नज़र आए तो हमें क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है और इसके लिए मेक इन इंडिया इस कैंपेन का हिस्सा होने वाले हर एक के लिए, हर निवेशक के लिए, हर उत्पादक के लिए ये ज़रूरी है कि इसका ख्याल रखें। और ये होते हुए अर्थात जैसे हमने कहा है इसका फ़ायदा हर एक को है जो न सिर्फ इसका हिस्सा बने हैं लेकिन हर कोई जो इसका बेनिफिट मिलेगा उन्हें और जो आने वाले समय में ये देख पाएंगे कि ये बदलाव एक बहुत बड़े तरीके से आने जा रहा है। एंड आई थिंक दिस कैंपेन बेसिकली टॉक्स अबाउट इट्स अ एज यू सेड, प्रधानमंत्री जी का ये पहला ग्लोबल कैंपेन कहलाएगा एक तरह से, लेकिन कहने की और जताने की यही कोशिश है कि इस कैंपेन के ज़रिए दुनिया भर में ये संदेश पहुँचे और साथ ही साथ देश भर के लोगों के लिए संदेश पहुँचे कि आप जितने जल्दी अपने आप को काबिल बना पाए और इसका लाभ उठा पाए उतनी जल्दी देश में ये बदलाव संभव हो सकते हैं। You're right, and I think it's very clear that the eyes of the world are on India because given the level of participation that we have from different countries as partner participants, given the level of participation by international companies and organizations who are participating here at this Make in India, so definitely India is in the eyes of the world. And it's not only participation here in terms of the exhibition, there's also going to be seminars. There have been close to, I think, 20 sector seminars being organized over the next few days. There's going to be panel discussions with, I think there's the CNN Asia Business Forum, which will talk about, which will interact with CEOs from across the world who will discuss, debate ideas that will shape not only India's, but Asia's economic and social future. There's going to be some awards, and there's going to be so much of interaction and so much of wealth of information to take out from this event that it is truly going to be absolutely enriching to anyone. Even if you're merely someone who watches it on television, it's going to give you a better idea of how your life is going to shape up in the near future. And I'm quite impressed by one particular segment here, and that is hackathon. Oh. That's a 24-hour marathon event where coders, engineers and designers will collaborate intensively for around 24 hours to come up with ideas to solve the urban design problems, and those will be organized as well. तो इस तरह से देखा जाए ना कि हर क्षेत्र को देखने की या फिर हर क्षेत्र पर एक गौर करने की कोशिश यहाँ पर हुई है. We talk about urban design, we talk about India's maritime manufacturing capabilities, a day-long session on global design and innovation is going to happen. तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रखा है कि जिसके बारे में सोचा नहीं है या गौर नहीं किया है या फिर जिसका निवेश या फिर जिसके ज़रिए मेक इन इंडिया कैंपेन को और बढ़ावा देने की कोशिश जो मिलती रही है, जो मिलनी चाहिए भी. That's right. There's so much to see, there's so much to do, there's so much to hear. And along with that, there's a bit to read too. In order to make sure that this Make in India campaign reaches everyone and to promote India as a preferred destination for global investment and manufacturing, there's going to be a special issue brought up by Condé Nast. And this is a one-time edition which will showcase some of India's most creative and dynamic innovators and entrepreneurs across various industries. It's going to be released at a very exclusive event a couple of days from now,
at this Make in India week. So you can look forward to this publication. It's a one-off publication by Condé Nast, especially and only for Make in India. Isn't that really so? डेफिनेटली सो। और मेरे ख्याल से ये सब करते हुए, लेकिन जहाँ पर एक तरह से मैन्युफैक्चरर्स को बुलावा दिया जा रहा है, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, विदेशों तक अपनी बात पहुँचाई जा रही है, देश के हर राज्य की तरफ ये बात पहुँचाई जा रही है, तकरीबन 29 स्टेट्स एंड उसमें से 17 इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन ये सब करते हुए छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर तक या निवेशक तक पहुंचने की जो हमारी कोशिश है, मेरे ख्याल से एक और बात को जहन में रखना यहाँ पर ज़रूरी है, और वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। आप अगर स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो यू डेफिनेटली नीड पीपल हु आर गुड स्किल डेवलपर्स एंड हु कैन हेल्प अदर्स डेवलप दो स्किल्स एज वेल। एजुकेशन के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ खास बातों का आदान प्रदान होगा ज़रूर। इनफैक्ट मेक इन इंडिया कैंपेन में लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स के साथ साथ विजनरीज, एकेडमिशियंस भी शामिल हैं, जो कि कोशिश करेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र ये जो है, और किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए एक अहम अगर बात है और जो ज़रूरी बात है वो है अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ की तरफ देखना। शिक्षा के हर शिक्षा क्षेत्र को हर तरीके से उन तक पहुंचाना जिन्हें इसकी न सिर्फ ज़रूरत ही कहलाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश में न सिर्फ लिटरेट हो, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इलिटरेसी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन न सिर्फ वो शिक्षित हो, लिटरेट हो, बल्कि शिक्षित हो और साथ ही साथ इस शिक्षा का बेनिफिट, इसका फ़ायदा देश के विकास के लिए हो। एंड दैट आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी valid argument if somebody will have to think about it. In short, education is going to be less theoretical, more hands-on, more practical, and that's the way it should be, and that's the way it is all across the world, because it's not only about gaining bookish education, it's also gaining real hands-on practical education which you use in real life situations. And this Make in India encompasses all that. It's not only food for your wallet, but also food for your soul. Did you know that there's going to be a evening of Sufi and spiritual music by the well-known Begum Parveen Sultana? So this is something for music lovers to really look forward to, because you know, these are really enlightening moments. After all, you can work so hard and you can make so much money, but if you aren't happy and you do not really enjoy the moments that life brings you, then what is life? So Make in India is also not only projecting India as a place to only make, but also make a life, to enjoy life. So there's going to be music, there's going to be food we spoke about. We did briefly see a glimpse of the elephants, so that reminded us of the Elephanta Festival, which is you know, going to be held by the Maharashtra Tourism Development Corporation. It will be held on the 16th and 17th. And the public are all invited to that. The Elephanta Caves are heritage caves which are just off the coast of Mumbai, and it is a well-visited picnic spot. It's a spot to visit for everyone at least once. There's going to be classical concerts, fusion concerts, which are going to be held at the Bandra Fort, the amphitheatre at the Bandra Fort. And there's also, with all the lovely people that we have in India, you can't but have a fashion show. But this will be a culturally organized fashion show. There's going to be textiles, haute couture. महाराष्ट्र के पैविलियन में ऑलरेडी हमने देखा है कि इस तरह से, particularly we talk about पैठनी, which is a silk saree, yes. almost a heirloom जिसे कहते हैं, कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे पाए। और ये साड़ी की, इस टेक्सटाइल की जो महती है और इसकी जो गाथा है, काफ़ी समय से इस पर गौर करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बदलते समय में ऐसा भी होता है, क्योंकि कुछ छोटे बड़े उद्योग। So have you inherited your पैठनी as yet? In fact, महाराष्ट्र में ये मानना बिल्कुल गलत नहीं है कि हर कोई, everyone aspires to have at least one पैठनी in the wardrobe, and I think that would be a good initiative, in fact, towards the workers who have been weaving these पैठनीज। एक साड़ी के लिए काफ़ी सारे दिन, हफ्ते, महीने लग जाते हैं। Correct. And it's, as I said, an heirloom, एक सांस्कृतिक टेक्सटाइल हेरिटेज है, और इसको बढ़ावा देना। बट दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट महाराष्ट्र की और भी कई सारी बातें हैं जो इस पैविलियन में जिसे दर्शाया गया है। लेकिन ख़ास तौर पर इसके अलावा एक और बात होगी कि हर राज्य की तरफ से ये कोशिश होगी। अब तक अगर माना गया है कि कुछ राज्य, देश के कुछ राज्य हमेशा आगे रहे हैं in terms of their GDP, in terms of their contribution to the national income, लेकिन अब कुछ और राज्य भी, जैसे हमने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये राज्य भी अब अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं
कि इस कैंपेन का पूरा लाभ So उठाया जाए। as a whole, no place in India is willing to be left behind. And Absolutely. if you've been to these places, Chhattisgarh and Odisha, they're beautiful places, very beautiful people, people with good hearts who are now also making sure that they're not only people with good hearts and beautiful environments, but also looking forward to take their place in the world as manufacturing hubs, as creators, as innovators, as service providers. So all across India, there's a movement to take their share of the world pie. And Odisha is a good place for culture. Sculptures are one of the, sculpture, dance, education. Odisha is very well known for that. And it's beautiful landscapes and it's really haunting sculptures. The temples of Odisha are world class. People come from all across the world to view the Konark temple and to visit all the other temples too. So it's lots that every state has to offer. Maybe it's not been so very well packaged earlier, but as we get more and more savvier, then definitely there is going to be a lot more. कोशिश हो रही है, isn't it? और MMRDA ग्राउंड्स पर आज मेक इन इंडिया सप्ताह का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और इस उद्घाटन में शामिल हुए हैं ना सिर्फ देश के बड़े बिजनेस टाइकून्स, लेकिन साथ ही साथ विदेश के कुछ बहुत बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और साथ ही साथ विदेश के बिजनेस टाइकून्स भी। और हर एक की तरफ से कोशिश रहेगी कि इस मेक इन इंडिया कैंपेन का हिस्सा बनते हुए भारत में निवेश करने की और अपॉर्चुनिटीज़ हो, साधन हो। भारत के लिए ये ज़रूरी होगा कि जो अलग अलग चैलेंजेस सामने हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, लेबर लॉज की तरफ भी ध्यान मोड़ा गया है, पर्यावरण की जो बात चलती रही है और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अलग से नीतियाँ तैयार हों, लेकिन साथ ही साथ एक ये बड़ा मौका कहा जाएगा बहुतों के लिए कि इस तरीके से अगर हम सभी चीज़ों का संतुलन रखते हुए एक बेहतरीन फ्यूचर बना सके, एक बेहतरीन मौका अपने लिए ले सके, तो आई थिंक इंडिया विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल एवर फॉर समथिंग एज सिमिलर एज दिस। बिकॉज डेवलपमेंट, विकास, प्रगति ये हर देश में होता रहा है और ख़ास तौर पर द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर नाउ फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम्स। तो भारत एक तरह से एक उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा इस देश को कि सब तरीके से बेहतरीन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे तरीके से पर्यावरण का संतुलन रखते हुए, स्किल्स डेवलप करते हुए, हर एक तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देश का जो युवा वर्ग है उसे इस विकास में शामिल करवाने की कोशिश करते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा देने का जो प्रयास है और उस प्रयास को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर पूरी तरह से हम संभाल पाए, इसका संतुलन मेंटेन कर पाए, अगर मेक इन इंडिया डेफिनेटली गोज ऑन टू बिकम अ वेरी वेरी एम्बिशियस कैंपेन देन। You're very right. We don't have to reinvent the wheel. We can definitely learn from the experiences of other nations from all across the world. So we are actually at a vantage point because we are developing. We have already lessons to learn from. We don't have to make the same mistakes, and we definitely can cut the learning curve very short. If you're watching on your screens, you're watching this entire expanse of MMRDA, which I think just about 2 weeks ago was just bare expanse. And now it looks like a massive, thriving, absolutely thriving, solid and structure. Yes, that's home to right now to thousands of dignitaries, many from across the world, and definitely captains of Indian industry are there here today. So when you look at it, you wouldn't believe that this was just open space not even 2 weeks ago. And now there are 27 huge pavilions spread over this grand expanse, all organized and all showcasing. Elephanta Caves का एक सीन यहाँ पर representation दिया गया है, and which is the World Heritage Site. देश में इस तरह के कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये इस तरह का खिताब मिलना, ये कहलाया जाना यूनेस्को की तरफ से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में इसके अलावा एलिफेंटा केव्स का ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनस जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाएगा। एंड ऑफ कोर्स अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र विच आर ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो तो महाराष्ट्र के इस पैविलियन में अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। If you can hear in the background, it's a traditional tutari which is used to welcome dignitaries to any festive occasion and even marriages and weddings. So that's a very distinctive sound. There's a tutari, and foreign dignitaries and
the Prime Minister, along with the Chief Minister of Maharashtra, are all making their way through the Maharashtra Pavilion, and Maharashtra being the home state for this event. It's India's number one state in terms of foreign direct investment and GDP. It has now set its target of winning investment commitments worth 2 trillion rupees. Oh, that's huge. That's if that happens, that's wonderful. Yeah. And of course, there's also all-encompassing development in all areas and all aspects of Maharashtra. It has a healthy business environment, and the government is working towards removing unfavorable factors and focusing very especially on micro, small and medium enterprises, so that there's holistic development not only of large industries but also of entrepreneurs, entrepreneurial industries, startups and private investors. So Maharashtra is there. There's a presentation of the traditional shawl. Being Maharashtra, this shawl is from Maharashtra. और इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ जो बातें हैं जिस पर खास गौर किया गया है, इनका सम्मान किया जा रहा है यहाँ प्रधानमंत्री जी का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस इनका सम्मान कर रहे हैं, और साथ ही साथ स्वीडन और फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री है, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री युहा सिपिला, इनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया है। The Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, is doing the honors and presenting a shawl to यहाँ पर एक और इनफैक्ट जो आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगा है और टेक्सटाइल्स की जो बात रही है, वहाँ पर महाराष्ट्र की पुणेरी पगड़ी का भी जिक्र हुआ है। सॉर्ट ऑफ अ हेड गियर जो कि पुणे की शान है और इतिहास से काफ़ी नज़दीकी वास्ता रहा है यहाँ पर। और इस महाराष्ट्र के पैविलियन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो देख रहे हैं, एक तरह से न केवल महाराष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव जो है उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ दिखाने की कोशिश है, पर साथ ही साथ इसके अलावा The foreign dignitaries are looking at a portrait of Dr. Babasaheb Ambedkar, the father of the Constitution of modern India, and of course his contribution to India is invaluable. So it's an integral part of Maharashtra. In fact, in Maharashtra, they also are talking about bringing in initiatives in retail trade, electronics, manufacturing, construction, port development, shipping. Special initiatives are given to some entrepreneurs, और बहुत जल्द environmental clearances की भी बात हो रही है, जो कि जल्द ज़्यादा बेहतर तरीके से ये किया जाएगा। और एक ख़ास, चूँकि इसका आयोजन, कैंपेन का आयोजन मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र हैज़ गॉट दैट एक्स्ट्रा एज, एक बेनिफिट मिला है और राज्यों से मैं कहूँगी, और इसका पूरा फ़ायदा ये राज्य देना चाहेगा। You're talking about talking about a better edge, and one of the edges that India has is that we are in Maharashtra, so that's a good edge, isn't it? And talking about foreign dignitaries who are visiting right here at this Make in India, some of them are not new to India or Maharashtra for that matter. Certainly. Or Indian art and culture, because you did speak about the Deputy Premier of Poland, Piotr Glinski. He has visited India very often, I've been told. In fact, he was a teacher earlier and he used to visit India to trek. He's an avid mountaineer and he's climbed many of the mountains, including Nanda Devi. So they're very aware of the Indian Milo, the Indian culture, Indian art and the Indian way of life. So when they're here now as representatives of government, they have a better idea and a more holistic approach and view towards interaction between two countries in only industry and development. बिल्कुल सही। और एक जो पुरानी कॉन्सेप्ट है इस देश के बारे में, या फिर एक जो ख्याल है कि एक तरह से हम बात करते हैं कि भारत दुनिया भर के प्राचीन संस्कृतियों में से एक संस्कृति जो भारत में रही,
सिंधु संस्कृति जो कहलाई, लेकिन उसके बाद फिर भारत की एक जो इमेज है, एक जो प्रतिमा दुनिया भर के काफ़ी सारे लोगों में जो रही, खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने भारत की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा या फिर यहाँ पर आने का कभी प्रयास नहीं किया। हम हालांकि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन उनके लिए द लैंड हैज़ ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड एलिफेंट राइडर्स एंड Where do you find them actually? Tell me. I'm really wanting it to be so. लेकिन ये एक प्रतिमा जो बदलने की कोशिश, ये पहली बार नहीं हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय में हमने ये पूरी कोशिश की है कि इस तरह का, क्योंकि हम जो अब देख रहे हैं वो यही है कि द अचीवमेंट्स दैट we have in the various sectors, whether it is the automobile sector, whether it is about scientific innovations and various discoveries and industries, लेकिन ये कहाँ तक औरों तक पहुँचा है, ये सवाल काफ़ी लाजमी है, क्योंकि क्यों फिर अब भी इतने वर्षों के बाद भी यहाँ तक तरक्की करने के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि भारत कुछ सीमित बातों तक ही इसकी एक प्रतिमा बनाई जा सकती है। और उस प्रतिमा को बदलाव देने के लिए मेरे ख्याल से ये मेक इन इंडिया कैंपेन काफ़ी तरीके से कोशिशमंद रहेगा। Absolutely, it's a matter of image, and image, you know, has been set in people's minds for let's say a few decades, as you say. Things have changed, of course, and many people are not aware of that. The sending the Mars probe to Mars, Mangalyaan to Mars, was a real eye-opener to the whole world. Absolutely. Is this possible? And that has opened the world's eyes. Although, of course, those in the know have used India as a manufacturing hub, have used India as a service hub. India is very well known for its service industry. And I think we still need to pull up our socks there, but we need to still go ahead. Course, there's always take great strides in it. There's always room for improvement all across the board, and that is not to be forgotten at all. But yes, we're not totally the image that media sometimes portrayed, foreign media has sometimes portrayed about India. We're not totally that. We're a lot more because we are such a large nation. In fact, we ourselves don't know what we are because we are in different parts of India. It's almost like being in a different nation. Many nations, you know, together, several nations. Yeah. But I think that is the beauty of the country as well. In many the tremendous amount of diversity. Correct. विविधता है इस देश में, और विविधता सिर्फ एल्रिक, अगर तुम्हारी बात को लेकर चलूँ, सिर्फ खान पान में नहीं है, नॉट जस्ट इन दोज एरियाज, बट एट द सेम टाइम कला, संस्कृति, टेक्सटाइल्स, मॉन्यूमेंट्स, विचार, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज़ इमेंस अगर देखा जाए, और ये सारे रिसोर्सेज जो भारत के पास है, इट इज़ नेसेसरी टू हार्नेस दीज रिसोर्सेज, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन नॉट जस्ट वी थिंक कि हम सोचें कि इसके बारे में करते रहना है, सिर्फ सोच नहीं होगी, इस पर अमल करना पड़ेगा। और इसके लिए एक तरह से ये शुरुआत है, जो शुरुआत हो चुकी है आज एक फॉर्मल तौर पर इस कैंपेन के ज़रिए फिर एक बार ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कि अब और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए नई तकनीक, नए दौर पर गौर करते हुए बहुत सारी और बातों पर गौर करते रहना। वो नहीं है कि जो हम अब तक साथ ले चले हैं उसे दूर रखकर पूरी तरह से नए को अपनाना है, लेकिन जो भारत का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, एंड दैट इज़ अबाउट इट्स कल्चर, हेरिटेज, इट्स स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़, इसका साथ लेकर आगे बढ़ते हुए वी ऑल्सो वुड वांट टू गो हैंड इन हैंड विथ the visuals of the construction industry, construction and infrastructure industry is really one of the backbones of progress. So construction, infrastructure, and now I think the Honorable Prime Minister is moving towards the defense pavilion, if I'm not mistaken. Right. So defense also has opened up. It used to be a very tightly closed sector, but defense has opened up. There's up to 49% investment, foreign direct investment allowed in the defense sector. In the aviation sector, it's 79%. So you can look forward to a lot more. Boeing has committed to a lot more involvement with India. Other air manufacturers of airplanes and air services are going to be more and more involved with India. With its smart city programs, there's also the development of greenfield airports all across. So there is going to be infrastructure development required not only for land-based development as in roads and railways. Ports aside, there's also going to be a requirement for airports
there's going to be airport management services, there's going to be all-round development for communication. So with this opening of the aerospace sector to 79%, there's also going to be greater involvement of foreign entities into India's defense airspace sector. So there's going to be more and more production of and tie-ups with Indian companies to make and produce defense equipment in India. Certainly so. और एक तरह से देखा जाए तो माना जाता है कि डिफेंस के लिए द अमाउंट ऑफ द बजट में जो हिस्सा है हमारा वो काफ़ी बड़ा रहा है। कुछ आलोचकों की तरफ से ये बात रही है ज़रूर कि डिफेंस पर इतना बड़ा हिस्सा बजट में देने की ये कोशिश क्या काबिल है, क्या लाजमी है, कहाँ और किस हद तक हम बढ़ावा दे सकते हैं। बट आई थिंक नाउ व्हेन वी सी दीज इंस्टॉलेशंस और जब हम इस तरह की प्रदर्शनी देखते हैं या फिर इस तरह के पैविलियन को भेंट देते हुए जानते हैं कि कितनी कोशिश की गई है इस सेक्टर को पूरी तरह से काबिल बनाने की एंड टू मेक इट completely it's self-explanatory in fact that one can talk about and every I mean irrespective of the fact that yes we are a developing nation और हमें ज़रूरत है कि एक बहुत ज़्यादा बजट में a section of it which should be diverted for policies for underprivileged and poor, but at the same time we also need, I mean no nation wants to be insecure. We definitely need I totally agree with you. India has a tradition of being a peaceful nation and absolutely loves peace, but you can only have peace if you're secure and strong enough to maintain that peace, you know. So and we have always hand in hand, absolutely yes, hand as a part of peace, our you should have the strength to be able to live peacefully. Absolutely. So without saying much, of course, defense is a very important sector. There's also, of course, the human development part of it. All these things are all to be done on the one hand, and on the other hand, there's always a pro and con for everything. But there has to be development in both sectors without a doubt. So without defense, you cannot develop your human capital. Without your human capital, you can't have a proper defense. So yes, there's give and take. को बढ़ावा देने के लिए फिर एक बार कुछ आशंकाएं मन में उठी थी कि किस हद तक फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सा ले सकें, और हमने काफ़ी देशों के साथ भारत ने जो समझौता किया है, जो साझेदारी की है, जिसमें यही जताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक जो हम तक पहुंच रहा है, बिकॉज लार्जली एज आई सेड, इफ़ वी डू नॉट डेवलप्ड indigenous, we do not give indigenous benefit or push to scientific activities, we will always have to depend on borrowed technology. Correct. तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ये जो एक कनेक्शन है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच रहे. और मेरे ख्याल से व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग टेकिंग अ ग्रेट प्राइड इन नेशन, अपने भारतीयत्व में, अपने देश के लिए एक गर्व जो महसूस करते हैं हम, इस गर्व का एक हिस्सा वो भी है कि काफ़ी हद तक एक साइंटिफिक टेम्पर बना रहे देश में, और ये सभी की जिम्मेदारी है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है. एंड टिल वी डू नॉट ब्रिंग आवरसेल्व्स टू दैट लेवल वेयर वी कैन expect each and every one of us to have that element of scientific temper installed in us, I really don't think it is possible. ये मुश्किल है फिर कि एक तरफ, क्योंकि इट विल बिकम अ ग्रेट मिसमैच कि एक तरफ हम इतनी बड़ी पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं कि हर दुनिया के हर देश से लोग आए, हम तक पहुँचे, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका बेनिफिट ले, और उसका बेनिफिट एक तरह से हमें भी मिले. लेकिन इट विल बिकम अ ग्रेट मिसमैच कि एक तरह तकनीकी तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पर बुनियादी तौर पर जो मॉरल्स वैल्यूज़ हैं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं. And I don't think that will be a great possibility. No, you're absolutely right. You're of course setting stringent standards, but that's required. One has to pull up one's socks, you know, pull yourself up by the bootstraps, so to speak, and face the world. It's a brave new world there, and that world just wants you to prove yourself. You know, times are changing, and our lion out there just embodies the fact that I'm going to step forward into a brave new world with a lot of strength and confidence. We already have world-class industries in India. We already have world-class products being manufactured in India, and we can look forward to more and more of that, and so that India can be seen as a place for quality manufactured goods. And we just saw some swanky cars here, and I'm just hoping कि इसके साथ साथ we would have those butter smooth roads as well, broad roads as well. And many the broad roads, yes, broad roads, I don't think it's just about seeing those broad roads run through, but I think it is also an image that you give for your country, isn't it? The broadness of thought and the mind.
क्योंकि इसका मतलब है कि हम देश के हर एक देशवासी का ख्याल करते हैं, उसके हर एक के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही अपनी सोच रखते हैं। और इसलिए मेक इन इंडिया कैंपेन के ज़रिए ये फिर एक बार, जैसे हम कह रहे हैं, एक कोशिश है सभी तक पहुंचने की, क्योंकि भारत अब तक अपने आप को दुनिया में काफ़ी तौर पर एस्टैब्लिश कर चुका है। भारत का फार्मा मार्केट जो है, जिसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है, ये जो 27 मेगा हॉल्स बनाए गए हैं, भारत का फार्मा मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा मार्केट रहा है, और जिसका वॉल्यूम बाय 2020 माना जाता है इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट फार्मा मार्केट, एंड one of those mega halls depict that as well. True. And India, not only pharma as in allopathy, but there is also a great demand for, besides homeopathy, Ayurveda, the Unani systems of medicine, holistic healing. So in India, the pharma market is really wide and diverse, because a lot of the rural population does not really have direct access to top of the line allopathic hospitals or centers of medical in case of medical needs, centers of medical care. So a lot of the healing does take place in traditional methods and traditional ways by traditional healers in far-flung rural areas of India. So yes, there is a great scope for pharma development and pharma education too, for not only the general population but also for doctors. The innovations in the medical field are happening as quickly as the innovations in the field of IT. So Certainly, if you're yes. a practitioner today, in about a year later, the new ideas have come in and new technologies have come in, and you have to upgrade your skills. So there is a great need all across the board for pharma development, pharma, not only medications, pharma for portrayal of the new technologies, for disseminating information. So all across the board there's going to be great need. Absolutely. और इसके अलावा फार्मा सेक्टर के अलावा एक और सेक्टर है जिस पर काफ़ी गौर किया गया है, एंड Alric, लेट मी टेल यू, जो हम देख रहे हैं अभी ऑन द स्क्रीन, प्रधानमंत्री जो अलग अलग पैविलियंस को भेंट दे रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वे अपनी तरफ से इस कैंपेन का हिस्सा बने हैं और बनना चाहते हैं और आगे ही चलकर कुछ और कंट्रीब्यूशंस देना चाहते हैं। बस 2 दिन पहले इस MMRDA ग्राउंड्स पर इस सब की तैयारी जब चल रही थी तो कुछ और लोग थे यहाँ पर जो काम में मशगूल थे, पूरी तरह से लगन से ये सारे इंस्टॉलेशंस फिट कर रहे थे, ये पैविलियंस बना रहे थे, और मेरे ख्याल से उन तक भी इस मेक इन इंडिया कैंपेन का एक बहुत अच्छा शेयर पहुँचे अगर इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हम पूरी कोशिश के साथ जो पूरी तरह से कोशिश हो रही है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की, और इस मेक इन इंडिया के लिए एक फ्यूचर में उनके लिए भी एक आश्वासन रहे, यही बहुत ज़रूरी है। The Honorable Prime Minister just passing the South Korea pavilion, and then now I can see the Tata pavilion on his left, and if I'm not mistaken it's the Ambani pavilion on the right. So top industries and industrialists of India represented here in this hall, and of course we have the partner pavilions. So this is where large industries, this is the large industry pavilion. There also are other pavilions which have small scale industries, which have development industries, which have entrepreneurs. We have pavilions that will showcase different types of technologies. We have the state pavilions, we've just been through the automobile pavilion, the energy and electrical pavilion. Food processing technology is yet another pavilion by itself, and we've also been through the Maharashtra pavilion. These are just some of the several pavilions out of the 27 that we have here at this BKC's MMRDA venue. You did speak about the roads in BKC are nice and smooth, and when you did speak about the roads and you're expecting butter smooth roads, if you heard some of the politicians speak, they have made promises that the roads are going to be as smooth as the ones in Singapore or as smooth as the cheeks of your favorite actress. But yes, Nariman Point के बाद, मुंबई में नरीमन पॉइंट के लिए, which has been a business hub, उसके बाद बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या फिर BKC, जहाँ पर ये MMRDA ग्राउंड्स है और जहाँ पर इस आज मेक इन इंडिया कैंपेन का उद्घाटन हुआ है, इसे एक पॉश बिजनेस हब, स्टैंडर्ड बिजनेस हब बनाने की जो पूरी तरह से कोशिश हुई है, और एक नहीं दो नहीं कई सारी देशी विदेश यानी मल्टीनेशनल कंपनीज भी है यहाँ पर, काफ़ी बड़े नाम है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल्स है यहाँ पर, कई सारे बैंक है, बैंक्स के ऑफिसेस है यहाँ पर, एंड
ये एक बहुत अलग सा एक बड़ा सा हब है बनाया हुआ, एंड ऑफ कोर्स ये आई थिंक इट्स एन आइडियल प्लेस to have an inauguration at the udghatin Things are changing definitely, as you said. These are international places. About a couple of decades ago, someone told me that I couldn't read in my vehicle a letter that was written to me by my friend who was in Europe while he was riding in his vehicle. That person wrote a letter while he was riding, and this person couldn't read it. So, but things have changed. Now you can. And I really want them to change, क्योंकि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से ये बदलाव हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, देखते ही देखते 5 सालों में देश का चेहरा बदल गया। आने वाले अगले 5 से 10 सालों में चेहरा बदलने की जो कोशिश है और जो उसके लिए जो काफ़ी मेहनत की जा रही है, I definitely do want to see those wonderful changes happening. Yes, absolutely. Changes are happening in the defense sector too, and that's the Defense Pavilion, where the Honorable Chief Minister, the Honorable Prime Minister, and all dignitaries are now walking through. मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है, एक ऐसी योजना है which is the centerpiece of the Indian government's drive to attract fresh foreign investment and spur job creation. It is the Prime Minister's global program and it was spoken about by in 2014. ये सोचा गया था कि भारत उभरेगा एक ऐसा राष्ट्र जो कि टॉप डेस्टिनेशन कहलाएगा फॉर ग्लोबली कहलाएगा फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसकी पूरी तरह से कोशिश और जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले हो चुकी है काफ़ी सारे दुनिया भर के और विदेशी कुछ कंपनियों के साथ जो हमारी बातें होती रही हैं, और ये आज पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इसे बढ़ावा देने की जो पूरी तरह से कोशिश हुई है, एक एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश है, उसी को दर्शाता है ये मेक इन इंडिया कैंपेन। I can see that the Premier of Finland, Juha Sipilä, is very intently involved with what's happening because Finland also has a great stake in the Make in India campaign. We also had the Premier of Sweden, Stefan Löfven, who is in the entourage there. So these countries do have a great stake, and they've committed to be part of this Make in India, and they're showing their active involvement. और स्वीडन, लिथुआनिया, फिनलैंड, कई और देश हैं जो इसका हिस्सा बने हैं, और ये सभी देश इनसे पहले भी भारत के इनसे संबंध रहे हैं। हमारा ट्रेड इनके साथ अच्छा रहा है, ट्रेड वॉल्यूम अच्छा रहा है। इसे और बेहतर बनाने की कोशिश है। न सिर्फ आशिया में ही भारत अपनी स्थिति को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके अलावा और देशों तक भी पहुंचने की ये कोशिश है यहाँ पर, और काफ़ी सारे अलग अलग क्षेत्रों की तरफ से, जहाँ पर देखा जाए अगर फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, ख़ास तौर पर हम फिनलैंड से लेते रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मिनरल्स, फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, कॉटन, आयरन, स्टील आर्टिकल्स, और जो उनसे आते रहे हैं, और अलग अलग देशों के पास जो उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी है या फिर उनकी जो उपलब्धियां हैं वो भारत तक पहुंचाने की कोशिश, और भारत अपनी तरफ से उन तक वो हर चीज़ जो इनफैक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल आइटम्स वी हैव मूव्ड ऑन टू सम वेरी high-tech items, and this is the aerospace pavilion, and in fact Boeing has said that it will assemble fighter planes, either the Apache or the Chinook defense helicopter in India. So it's also willing to manufacture the FA-18 Super Hornet in India if the IF were to be interested in it. So international companies in the aerospace domain are really looking forward to have their foothold in India, and of course India is looking forward to get the best of technologies and best of equipment from different places, from different countries and companies all across the world. So this is a mere glimpse of the entire vista that this Make in India does offer, not only to people in India to access and of course to use different technologies and services from all across the world, but for countries and companies across the world to partner with India in development and growth. और इसका जो बेनिफिट है ये बिजनेस हॉन्चोस लेकर ताकि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इसमें शामिल तो हुए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट और मेक इन इंडिया कैंपेन की ये बात उस कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने वाले हर उस इंसान तक पहुँचे, हर उस
व्यक्ति तक पहुँचे जो कि न सिर्फ इन कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स का एक हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ एक बेहतर स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल सबके लिए हो। यही उम्मीद अगर हम करें इससे तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज समवेयर वी विल हैव टू रीच दैट स्टेज। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज दिस एंटायर एफर्ट फॉर? Correct, and this entire effort needs real effort, because if the GDP is to grow, manufacturing should grow, and manufacturing should grow more than that 10-12% that it is. So this push is to increase the manufacturing sector, to develop manufacturing so that the GDP, overall GDP, does increase. This is all in keeping with the vision to make India one of the world's best places, not only to visit as a tourist but also to visit for business and work. So here we are at this Make in India center, at this Make in India week which is being inaugurated right here at Mumbai. The Prime Minister has made a tour of several of the large venues, and now he's on his way to the next meeting. Alongside, of course, to see him off and to also be part of this entourage are heads of state from all across the world, leading Indian business magnates, all gathered together for a piece of this action called Make in India. The future, they say, is in manufacturing, most especially domestic manufacturing, which is the key to having faster, more inclusive and sustainable growth. But of course, manufacturing, there are great stakes involved. It's not just because of the number of people it employs, but also because of the other inputs that are required to really make India a world-class manufacturing hub. And that's not just in terms of manpower and raw materials, but it's also in terms of systems and processes and government legislations, and in fact every part of the ecosystem that goes into creating a manufacturing base. So there is room for improvement all across the board, undoubtedly. But the good point is that there is so much being done to rectify what has not been done before, and to take positive steps so that we are where we want to be in the very near future. Certainly, क्योंकि आने वाले समय में हम सिर्फ वो नहीं करना चाहते या देखना चाहते हैं जो हमने अब तक किया है, लेकिन जो अब तक किया है उसके सहारे आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की जो कोशिश है, लेकिन विविध सेक्टर्स पर गौर किया जाएगा और इन सेक्टर्स को बढ़ावा देते हुए आम आदमी का ख्याल रखते हुए देश को आगे ले जाने की ये कोशिश मेक इन इंडिया कैंपेन, जिसका उद्घाटन आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड्स में हुआ है और विविध पैविलियंस को भेंट दी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें इन पैविलियंस में खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पैविलियंस थे, जहाँ पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों की एक छोटी तरह से एक प्रदर्शनी लगी थी, जिसके तहत बताया गया था कि कौन से बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जिसके ज़रिए भारत उनके साथ एक तरह से समझौता या साझेदारी कर सकता है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के छोटी प्रदर्शनी थी। यहाँ पर पैविलियंस में एक झांकी के तौर पर दिखाया गया था कि कितनी विविधता से और अलग अलग सेक्टर्स में हर राज्य केवल एक सेक्टर में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखता है या फिर स्पेशलाइजेशन नहीं रखता है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में लोगों तक पहुंचने की, इन्वेस्टर्स तक पहुंचने की, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने की ये कोशिश रहेगी। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है और साथ ही साथ एरोस्पेस, डिफेंस के पैविलियंस को प्रधानमंत्री ने भेंट दी है। You're right. You did also speak about the pharma sector and how it's going to be developed. As a side note, I'd like to remind our viewers that there's also going to be a centerpiece medicine corner, which was called Tabiyat, which is deals about medicine and healing in India. Tabiyat means health. Absolutely. in India, in Hindustani. So there's going to be an exhibition which will examine the history and contemporary practice of sustaining human health in India. It's going to be held right up to the 28th of March, and it's going to be held at the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, which was early the Prince of Wales Museum. So it's at Fort, which is the southern part of Mumbai.
and it's going to focus on traditional medical and medicinal systems in India. So it's all about all inclusive events all across. There are also going to be art events, few art forms that carry the unmistakable creative stamp of culture. There is, of course, Indian miniature art, which is very painstakingly done and created and has stood the test of centuries. There's going to be, it roots back to the Mughal times, and it's, some say it's a dying art form with very few practitioners remaining. So I guess this will help revive this traditional art form, and this is going to be held at Art Desh Gallery, which is at Walkeshwar. So on the 16th of February. So this timeless art of India will get a revival, will get new people, will get the world's focus on it, on bringing different aspects of India to the world stage is what this Make in India is doing. And certainly India is one of the fastest growing economies globally. हम BRICS का हिस्सा हैं, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa. लेकिन इसी के साथ साथ भारत इन सभी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. एंड आज ये विकासशील राष्ट्र है, औद्योगिक देश है और इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है. आज मुंबई के MMRDA ग्राउंड्स पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मेक इन इंडिया कैंपेन का उद्घाटन किया है, जो कि 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये सप्ताह जारी रहेगा. That's right. This is a fantastic initiative for global brand building, for key decision makers, for experts. Yes, the Honorable Prime Minister's vision has brought us here, and I'd just like to end with a quote that it has taken us so far. By Zig Ziglar, this quote is, it says, "Go as far as you can see and you will see further." With that, that's the road ahead. That's the road ahead. With that, it's bye-bye from Alaric Ferns and Priyamvada Sawant. Thank you for viewing Doordarshan.